हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, लिटरेचर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एज ऑफ पोप की पोएट्री के बारे में। बेसिकली वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पोएट्री, पोप की लाइफ को हम पढ़ेंगे थ्रू आउट, इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स थे नेट के रिगार्डिंग उन्हें जानेंगे, और पोएट्री में इस एज में जो कुछ राइटर्स थे ना जो इम्पोर्टेंट है हमारे नेट के रिगार्डिंग कि जिनके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है नेट में, वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा मैं आपको ना बता देता हूँ कि एज ऑफ पॉप में जो लिटरेचर था उसकी वजह क्या थी, वो ऐसा क्यों था। अब इसमें क्या हुआ था ना कि विलियम थ्री के जाने के बाद क्वीन एन ने 1702 में इंग्लैंड की राजगद्दी संभाली थी। तो अब जब भी कोई नया किंग आता है या नई क्वीन आती है तो उसके साथ इतिहास में जितने भी एजेस देखेंगे आप, सब में ये चीज कॉमन है कि नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उस सोसाइटी में। और जब जब किसी सोसाइटी में कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है उस टाइम के लिटरेचर में, जो कि पोएट्री हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, सब में रिफ्लेक्ट होगा। इस टाइम पे वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई कोई नई क्वीन आई है तो वो उसके साथ क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव होनी शुरू हो गई थी इंग्लैंड में। क्लब्स और कॉफी हाउसेस का कल्चर आ गया था, लोग क्लब्स में जाते थे, इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे से। कॉफी हाउस जो थे वो डेवलप होने लगे थे, उनमें लोग जाते थे, मिलते थे नए लोगों से, बातें करते थे, तो नई नई चीजें जानते थे, बताते थे एक दूसरे को। पब्लिशिंग हाउसेस जो थे उनके भी नंबर सब बढ़ने लगे थे, जो पहले बहुत कम होते थे अब ज्यादा लोग पढ़ रहे थे तो ज्यादा छपने की भी जरूरत थी। मिडिल क्लास की जो मोरालिटी है ना उसमें एक राइज देखने को मिला था इस एज में। तो ये वो सब फीचर्स हैं जिन्होंने इस एज के लिटरेचर को काफी बदला, काफी उभारा। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस एज के। द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस व्हिच एग्जिबिट द सुपरमेसी ऑफ गुड सेंस, rationality and avoidance of enthusiasm left an indelible influence on the literature of the age of Pope. अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करके अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि इसे एन एज ऑफ प्रोज और रीजन भी कहा जाता था। अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रैक्टिकल interests which we have already discussed arising from the new social and political conditions demanded expression not simply in books but more specially in pamphlets, magazines and newspapers. Poetry was inadequate for such a task, hence prose developed rapidly and excellently. इससे क्या समझ में आता है कि भाई प्रोज के बढ़ने का रीजन ही इस समय पे ये था कि लोग पोएट्री को समझ नहीं पाते थे, इसीलिए पोएट्री ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी। उसको रिप्लेस किसने किया? प्रोज ने, जो कि समझना और सीखना आसान था लोगों के लिए। द पोएट्री ऑफ द फर्स्ट हाफ एज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्क ऑफ पोप इज पॉलिश्ड एंड विटी, बट इट लैक्स फायर, फाइन फीलिंग, एंथुसियाज्म एंड इमेजिनेटिव अपील। आसान भाषा में इट इंटरेस्ट्स अस एज अ स्टडी ऑफ लाइफ बट फेल्स टू डिलाइट एंड इंस्पायर अस। अब सटायर के बारे में जानते हैं। The prevalence of satire which resulted from the unfortunate union of politics and literature. It is an important literary characteristic of this age. Nearly every writer of the first half of the 18th century was used and rewarded by Whigs or Tories for satirizing their enemies and for advancing their special political interests. Pope was a singular exception in this regard, but he nevertheless followed the prose writings in using satire too largely in his poetry. Next is the classic age. अब एज ऑफ पोप को है ना, इसे ही काफी बार क्लासिक एज कहा जाता है। It refers to writers of the highest rank in any nation. It was first applied to the works of great Greek and Roman writers like Homer and Virgil. In English literature, any writer who followed the simple, noble and inspiring method of these writers was said to have a classical style. और दूसरा, it was a period marked by a number of celebrated writers who produced books in is called the classic period for a nation's literature. The age of Dante in this classical age of Italian literature, the age of Louis XIV in this French classic age and the age of Pope is not the classic age like those of Homer and Virgil,
The writers of the age of Pope disregarded the Elizabethan literary trends, which are conspicuous for naturalness of style without regard to rules, enthusiasm, romantic emotions, flight of imagination, vigor, freshness, and fine feeling. The writers of this period under discussion demanded that their poetry should follow exact rules. In this respect, they were influenced by French writers, especially by Boileau and Racine. They insisted on precise rules of writing poetry. They professed to have discovered their rules in the classic of Horace and Aristotle. Dryden and Pope pioneered the revival of classicism, which confirmed the rules established by the great writers of other nations and which ignored the creative vigor of writers, depth and high seriousness of subject matter, and the vigor and freshness of expression. The classical writers of the 18th century regarded the Old English writers with contempt and indifference. They were guided by reason, good sense, and wit. They wanted order and balance, and every kind of excess and irregularity was abhorrent to them. The writers of this period care for form, not for the weight of matter. Good sense is one of the central characteristics of the literature of this period. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं literature of the town. The range of literature of this period is strictly limited. It is the literature of the town and the fashionable upper circles of the city of London. Pope, Addison, Steele, Burke, and all other writers of this period deal only with urban themes. Steele and Addison, though urban in outlook and temperament, show remarkable interest in the middle classes and thus broaden the scope of literature which prior to them was strictly confined to fashionable and aristocratic circles. तो यहाँ तक जाना आपने दोस्तों की इस एज के जो लिटरेचर थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब कि क्या गुण उसमें से दिखते थे पढ़ने वालों को। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि पोएट्री में क्या काम हुए थे इस एज में। तो चलिए अब इस एज की पोएट्री के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हें हम पढ़ेंगे सबसे पहले। In poetry, the tradition continued of brilliant topical satire and of didactic poetry that frequently was more tedious than brilliant. Appeal was normally sought to what was variously called reason, nature, or common sense. Polish and elegance of form were of more importance than subtlety or originality of thought. यानी कि एक जो मुख्य विशेषता है कि जो काम हो रहे हैं ना उनका ओरिजिनल होना या नया होना इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम पे। इम्पोर्टेंट क्या था कि वो साफ सुथरा हो, एलिगेंट हो, लोगों को बस पसंद आना चाहिए, नया हो, पुराना हो, इंस्पायर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं था ज्यादा लोगों को। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पोएट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड common sense. The poetry of the adherents of the Augustans is the product of intelligence, good sense, and reasonableness. It plays upon the surface of life and ignores the primary human emotions and feelings. It is realistic and unimaginative, didactic and satiric. It is a poetry of argument and criticism of politics and personalities. The poetry of Pope is the flawless example of all that is best in the poetry of this age. Next is town poetry. It is strictly confined to town. The fashionable aristocratic society attracted the poets of this period. It ignores the humbler aspect of life and shows no real love of nature, landscapes, or country things and people. It is a shallow, superficial poetry which neither inspires nor ennobles mankind. Its theme is unpoetic and its character is prosaic. It has no universal appeal. आगे देखिए अब artificial and conventional style. The poets deftly cared for form and took all pains to polish and refine the poetic styles. It led to the establishment of a highly artificial and conventional style
which presently became stereotyped into a regular traditional poetic diction. Simplicity and naturalness of expression were sacrificed for the frequent use of classical embroidery, grandiloquent phrases, pompous circumlocutions. Plain and direct expressions were avoided even when the poets dealt with the commonplace matter. The plain and forceful expressions like "God rest his soul" was expressed in bombastic and artificial phraseology. External blessings on his shade attend. It was against the gaudiness and inane phraseology that Wordsworth emphatically protested. Next, literary forms. During this period, the satiric and narrative forms of poetry flourished. The satiric poetry is common and of high quality. Pope's Dunciad is the best example of a personal satire. Satire tends to be lighter, brighter, and more cynical. Narrative poetry is of considerable bulk and contains some of the best products of the age. Pope's translation of Homer is a good example of narrative पोएट्री। तो अभी तक आपने जाना कि इस एज के जो लिटरेचर था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिले। उसके बाद हमने पढ़ा जो पोएट्री इस एज में हुई यानी कि एज ऑफ पोप में जो पोएट्री से जो पोएट्री के वर्क्स थे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमें क्या बताते थे या क्या कॉमन फीचर्स थे जो उस एज की पोएट्री में हमें देखने को मिलते थे। अब हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1688 में और 1744 में ये गुजर गए थे। He wrote tolerable verses when he was 12 years old, यानी कि जब ये सिर्फ 12 साल के थे तभी से लिखना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इतना अच्छा नहीं लिखता था, इसीलिए इनके काम को टॉलरेबल कहा जाता है कि हाँ भाई पढ़ने लायक था, सहन करने लायक था। He was the son of a London tradesman. His tiny and delicate physical constitution and his faith in Roman Catholicism generally influenced his career as a poet. Due to his ill health, he was privately educated and could not cultivate the knowledge of the world of nature or of the world of human heart. By reason of the sweeping laws against the entrance of Catholics into public service, he was shut out from the ordinary career of Englishmen in Parliament. Alexander Pope received very little school education, but he privately studied English books and picked up a smattering of the classics. He began to write poetry quite early. Pope acknowledged Dryden as his poetic master, though much of his work was influenced by Boileau, the French poet and a critic. The publication of Essay on Criticism and the Rape of the Lock stormed him into popularity. His translations of Homer were so successful financially that he bought a villa in Twickenham on the Thames. Pope died in 1744 and was buried in Twickenham. अब हम इनके वर्क्स को पढ़ेंगे। थोड़ा आसान करने के लिए ना अलेक्जेंडर पोप के जो लाइफ में मतलब जो उनकी वर्क लाइफ थी उसको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पीरियड जो कि 1704 से 1713 तक था। नेक्स्ट इसे मिडिल पीरियड कहा गया जो कि 1713 से 1725 तक था। एंड लास्ट पीरियड जो कि 1725 से 1740 तक रहा और इस पीरियड के खत्म होने के 4 साल बाद वो गुजर गए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीरियड जो कि 1704 से 1713 तक चला। ये पीरियड जाना जाता है पोप के एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए। इनके जो पेस्टोरल्स थे वो 1709 में आए थे। द कैरेक्टर्स एंड सीनरीज वर आर्टिफिशियल as they are based on classical models. The work is important as an experiment in verse technique. Pope handled the heroic couplet with great metrical skill, variation of speed and tone, and delicacy of touch. An essay of criticism, जो कि 1711 में आया था, is also written in heroic couplet. It sums up the art of poetry as taught first by Horace, Boileau, and other 18th century
Neoclassicism. It is hardly a poem but a restatement of the code of the ancients. Pope perfects the heroic couplet by impairing to it consciousness and epigrammatic neatness which have given his remarks the preeminence of proverbs. Windsor Forest 1713 में publish हुआ था is a pastoral in a familiar meter. The Rape of the Lock, a masterpiece of its kind, was first published in 1712 and then published in an enlarged form in 1714. यही इनका सबसे फेमस वर्क भी है. It is a mock heroic poem in which the mockery arises from the contrast between the sublimity of the style and what the 18th century called the meanness of the occasion. Pope's mock heroic is still considered the best of its kind in the English language. The Rape of the Lock is not only a satire on society, it is also a witty parody of the heroic style in poetry. It is remarkable for flawless poetic craftsmanship, airy grace and sustained lightness of touch. अब जो इनका जो मिडल पीरियड है ये सबसे ज्यादा रिमार्केबल है क्योंकि इस टाइम पे ही पोप ने जो होमर था उसका ट्रांसलेशन किया. He translated the entire Iliad and half of the Odyssey, and the later works was finished by two Cambridge scholars, Elijah Fenton and William Broome. Pope's knowledge of Greek was inadequate, so he had to depend on Latin, French, and English translations. What distinguishes Pope's translation of Homer is that he interpreted Homer in the elegant artificial language of his own age. Not only do his works follow literary fashions, but even the Homeric characteristics lose their strength and become fashionable men of the court. In this period, Pope also wrote Eloisa to Aberland and the Elegy to the Memory of an Unfortunate Lady. Next is the last period जो कि 1725 से 1740 तक लास्ट करता है. इस पीरियड के दौरान पोप ने काफी मास्टरली सटायर्स लिखे on the hack writers of Grub Street. The works of this period include the Lord Bathurst, of the use of riches, of the characters of women, and इनका सबसे important और famous work इस एज का an essay on man. इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया है मैन का प्लेस इस यूनिवर्स में. इस ऐसे का पर्पस जो है जो पोप ने ही अपने शब्दों में कहा है वो है It is to vindicate the ways of God to man. The vindication is perfectly accomplished in four poetical epistles concerning man's relation to universe, to himself, to society, and to happiness. The Dunciad is a long and elaborate satire on dances. तो इस एज की पोएट्री जो थी वो हमने कवर की. पोप के बारे में हमने पढ़ा. पोप के इम्पोर्टेंट वर्क्स जाने हमने जो नेट में काफी दफा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम जो पोप के अलावा जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे ना इस एज के उनके बारे में. इसके अंदर हमारे पास पहला नाम आता है मैथ्यू प्रायर का जो कि 1664 से 1721 तक जिए. इनका जो पहला वर्क था वो एक पैरोडी थी ड्राइडन की द हिंड एंड द पैंथर की जिसका टाइटल था द टाउन एंड कंट्री मूव्स जो कि 1687 पब्लिश हुआ था. इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद चार्ल्स मॉन्टेग. और इनके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं एल्मा, द टाउन एंड कंट्री मूव्स, द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, द कमेलियन, द थीफ एंड द कॉर्डेलियर और टू कॉल. अब इनके बारे में एक जो बात थी ना कि इनकी जो लॉन्गर पोएम्स थी उनमें स्ट्रेंथ, पावर और पैशन की काफी कमी महसूस हुई थी. नेक्स्ट इज जॉन गे जो कि 1685 से 1732 तक जिए. ये सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं इनका इम्पोर्टेंट वर्क फेबल्स जो कि 1727 पब्लिश हुआ था उसके लिए जो कि एक कोलोक्वल ऐसे है. इनके जो दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं दी Beggars Opera, The Rural Sports, The Shepherd's Week, What Would You Call It, or The Art of Walking the Streets of
लंदन। नेक्स्ट इज एडवर्ड यंग, जो कि 1683 से 1765 तक जिए। ही रोट वेरियस काइंड ऑफ पोएट्री, जैसे कि द लास्ट डे 1714 में पब्लिश हुआ था, द फोर्स ऑफ रिलीजन जो कि 1714 में ही पब्लिश हुआ था, और मोरलाइजिंग्स रिटन इन द हीरोइक कपलेट, जो इनका द लव ऑफ फेम है 1725 में आया था, वो shows an advance in the use of the heroic couplets. He is remembered for the complaint or night thoughts of life, death and immortality, जो कि 1742 में पब्लिश हुआ था, which is written in the blank verse. It was occasioned by the death of his wife. It is a lengthy poem of sensuous reflection and shows considerable technical skill in the management of the blank verse. Next is लेडी विंचेल्सिया, जो कि 1661 से 72 तक जिए। She stood to some extent for the new spirit. Some of her poems are The Spleen 1701, A Pindaric Ode, The Prodigy 1706, Miscellany Poems 1713. Containing a nocturnal reverie, she had the gift of producing smooth and melodious verse, and had a discerning eye for the beauties of nature. Wordsworth singled her out as a remarkable poet. Next और last important poet जो हैं थॉमस पार्नेल, 1679 से 1718 तक जिए। He made a notable break with the trends of the 18th century poetry. His best works is contained in The Hermit, which reminds the reader of the deserted village. He shows skill as a versifier and he had a genuine regard for nature. So that's it for the video guys. इस वीडियो में हमने एज ऑफ पॉप जो लिटरेचर था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, एज ऑफ पॉप में जो पोएट्री के वर्क्स हुए उनको पढ़ा, इम्पोर्टेंट जो हमारे पास वर्क्स थे नेट के रिगार्डिंग उन्हें हमने लिखा, उन्हें हमने जाना, इम्पोर्टेंट राइटर्स को जाना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एज ऑफ पॉप के प्रोज के बारे में, इम्पोर्टेंट राइटर्स जैसे कि डैनियल डिफॉय, जोनाथन स्विफ्ट, सर रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन को जानेंगे, और इनके अलावा भी जो छोटे छोटे राइटर्स थे जिनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो नेट में काफी दफा पूछे जाते हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो जरूर देखना उस वीडियो को भी, और इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।